Bismillahirrahmanirrahim. We are here with an experimental series. We will be talking about some experiments in this lecture, and we are going to study the chapter 4, that is about the experiments of amino acids and the proteins. Actually, this section of this experimental manual is containing 16 experiments, but we will be studying some selective experiments, and all these experiments will be studied from the Ali et al. From the Experimental Biochemistry and Biotechnology Series 1, 2019, and its second edition. So in today's lecture, we will be talking about these experiments. Experiment 4.1, how to perform different qualitative tests for the identification of amino acids. We will also see the titration curve of glycine and how the PI value, isoelectric point, and pKa value of the amino acids are calculated from this titration curve. Next experiment will be hydrolysis of the protein from the dried plant tissues. And the next experiment, qualitative test for the amino acids obtained by the hydrolysis of the protein. We'll see next how will you extract the total proteins from the animal tissues. This will be some extra experiments in today's lecture, and the estimation of total proteins, total serum proteins by the Lowry method. Next will be the Bradford assay, that is also called the dye binding assay for the protein quantitation. Next will be the protein quantitation by the gel-Dahl method. This experiment has been taken from the series 3 that I am going to publish soon. And next will be the quantitation of the protein by the BCA assay. So most of the time, the proteins are quantitated in the laboratories, in the molecular biology laboratories by this BCA method. Next will be the determination of the molecular weight of the protein by the STS page. And all these experiments have been taken from the Experimental Biochemistry and Biotechnology Series 1. So the first experiment 4.1 is how will you perform the different qualitative tests for the identification of the amino acid. The first is the mean hydrogen. So how will you distinguish between the solution of a carbohydrate C, this is carbohydrate for example CARB, carbohydrate, and this is the solution of for example some amino acid AA for amino acid. So first of all we have to identify whether it is amino acid or carbohydrate or some other thing. For the amino acid, we add 0.1% of mean hydrogen solution, and sometimes immediately the purple color appears. And the appearance of purple color indicates that the solution belongs to the amino acid. It is the solution of amino acid. This is the purple color I'm showing you here. So next is the test for the identification for the qualitative test of aromatic amino acids. So in this test, 1 ml of concentrated nitric acid is added to the 2 ml of the sample solution. And we boil and then we cool it, and then we add the 40% NaOH solution in excess. So what happens, initially the yellow precipitate appears that are dissolved, and then when the NaOH is added, the orange color appears. Initially yellow color appears, and upon the addition of sodium hydroxide, it turns into the orange. Initially the yellow precipitate, and then it is converted into the orange color. Next is the identification of imidazole group and phenyl hydroxyl group identification that are present in the amino acid. What we do, 0.5 ml of 1% sodium nitrite is added to 0.5 ml. 1% 0.5 ml is taken from the sodium nitrite, and 0.5% of 0.5 ml of sulfonic acid is added. We mix this one for 1 minute, and then we add 1 ml of sample solution. Then we add 1 ml of 10% sodium carbonate. When all these reagents are added, either the cherry color is appeared or the orange red color is appeared. Cherry color means this is histidine, this amino acid is histidine, and the tyrosine are showing the orange red color, some reddish tone is there in the orange color. Next is the identification of the tyrosine. How do we identify? We add 2 ml of 10% mercuric sulfate to 2 ml of the sample solution. After the sample solution is mixed with the HgSO4, we boil, and then we add 5 drops of 1% sodium nitrite. Sodium nitrite was also used here. And then we warm it gently. The appearance of red precipitate indicates that tyrosine amino acid is present.
So these are some general tests for the qualitative test of amino acids. So next is experimental 4.2. This experiment is about the titration curve of glycine, and we can also find the isolated point pi and the pKa value from the titration curve of amino acid. This is an important experiment even for the coursework, even in the coursework and also in the practical work. So what's the principle that amino acid having carboxylic and amine groups can react with both acid and bases? You know, the carboxylic will react with base, right? And the amine group will react with acid. So when they react, the pH of the amino acid solution changes, and this change in pH is drawn against the added quantities of acid or bases. We will see in the next slide. So what materials we do need? We need pH meter, we need the 0.1 molar HCl, and we need 0.1 molar NaOH and 0.1 molar glycine we do need. So first of all, we standardize or we calibrate the pH meter by using the standard buffer. These are usually already in standard form in the calibrated form, the pH meter. Then we take the 20 ml of 0.1 molar glycine solution into a conical flask and determine its pH. Then we keep on adding 0.3 ml of 0.1 molar HCl and note the pH after each addition until the pH falls to 1.6. Usually, the pH of this solution of glycine is somewhere around 5.3. When we keep on adding acid, we reach a point when its pH falls up to the 1.6. Then we stop this reaction and we note all the added quantities of HCl and all the changes in pH. Okay. The one precaution is that near the buffering zone, we add 0.6 or 1 ml of HCl solution, because near the buffering zone, there is a very small change in pH upon the addition of the HCl. Next, we wash the pH electrode with distilled water and we take another 20 ml of yes. We take another 20 ml of glycine solution in another conical flask and check its pH. In the previous run, we added the HCl, but in this run, we will use 0.1 molar of NaOH solution. We will keep on adding 0.3 ml of 0.1 molar NaOH solution, and we will keep on noting its change in pH. We'll keep on adding the NaOH until the pH rises up to the 12.5, until the pH rises to the 12.5 pH. We will plot this titration curve of pH versus its pK to find the pKa values. pH versus the amount of hydroxyl ion removed or added. We will see in the next slide. For example, 0.3 ml of HCl was added. Its pH changes reading came out to be 5.54. When another quantity was added, when another quantity of HCl was added in a way that total quantity became 1.5 ml, then its pH lowered up to the 4.36. When another quantity was added, so that the total amount of HCl added became 2.7, the pH turned out to be 4.01. In this way, we keep on adding the HCl and the pH keeps on falling. In the next, we will take again another 20 ml of glycine and we keep on adding the NaOH solution. As we keep on adding the NaOH solution, the pH is again increasing this way. You can see 8.48, 9.35 up to 10.36. So this is the pH that we noted, and this is the amount of HCl or NaOH that we added. So we have to draw actually the hydroxyl ion equivalent versus the pH to draw this calibration curve. How do we get the hydroxyl ion equivalent? I devised a strategy that this is 0.3 ml of HCl. If we subtract 14 you know is the maximum pH that we usually take.
If we subtract 0.3 from this 14, it comes out to be 13.7, because the addition of HCl reduced the hydroxyl ion, and it is 13.7. And for the next 1.5, when subtracted from the 14, is 12.5. This is this way, this way, this way. We are actually decreasing the hydroxyl ions by the addition of HCl, and you can see that the hydroxyl ion are decreasing downward here, and the pH will remain the same. We already noted this one, and these are actually the hydroxyl ion equivalent. These are the hydroxyl ion equivalent that we obtained by subtracting the amount of HCl added from the 14. In the same way for the NaOH, because NaOH is adding to the hydroxyl ion, so we add 0.3 to the 14. It becomes 14.3, 16.1, 17.9, this way. We keep on adding to the hydroxyl ion by the addition of NaOH. So these are again the hydroxyl ion equivalent. These hydroxyl ion equivalent are taken on the x-axis and pH on the y-axis, and we draw all the points that we obtained here. It's getting dirty. So we draw hydroxyl ion equivalent versus the pH. When we draw this one, we obtain this kind of curve. You can see. So this curve has the properties we have already talked in the coursework. This curve has two portions, like this is one portion, okay, and this one is another portion. If we see one portion, it is sharper at edges, it is steeper at edges, and in the middle it is almost horizontal. So this horizontal region is the buffering zone. Look, this horizontal region is the buffering zone. Again, for the upper portion, upper half, we can see this is the buffering zone for the upper half, and this is again the sharp steep edges here, you can see. So this one, the middle of the horizontal zone, correspond to the pKa1 value. This horizontal region correspond to the pK1 value, and this one, upper one, horizontal region correspond to the pK2 value. And this one, the very sharp region that is connecting two halves of the titration curve, is the isoelectric point. Isoelectric point is that point of an amino acid at which net charge on that amino acid is 0. So this is the isoelectric point. This isoelectric point is the pH point. This is 5.97 we calculated from here, and this region is when a perpendicular is drawn on the y-axis, this comes out to be 9.6. When perpendicular from this horizontal region is drawn on the y-axis, this comes out to be 2.34. This titration curve is going to give us the pK1, pK2, and the isoelectric point of an amino acid. What's the result? Glycine has pK1 and pK2 and pI values of 2.34, 9.6, and 5.97 respectively. So what's the significance? After knowing the buffering zone of an amino acid, we can use that amino acid as a buffer system. So this is exercise you can see by yourself. So next experiment is the hydrolysis of the protein from the dried plant tissues. So strong acids hydrolyze hydrophobic peptide bond. This is the principle. Or look, this is the tripeptide, and the pink one are showing the peptide bonds, you can see. And when the 6 molar HCl is added and it is heated, so all the peptide bonds are dissolved. You can see carboxylic and amine groups are now in separate and not in the peptide bond. So these are the materials required for these experiments. What will we do? What's the procedure? Take 5 grams of dry sample and add 10 ml of 6 normal HCl. We will plug this test tube, and we will add the nitrogen gas so that there is no oxygen, because oxygen can cause the oxidation and there will not be efficient hydrolysis of protein. Okay, seal the test tube with the help of welding torch. We will seal the tube, and though there is no oxygen inside the test tube, and we will place this test tube for 22 hours, almost 24 hours at 110 degrees centigrade, and then we will cool it and then bring the test tube and put the sample in the china dish, and
place a china dish in water bath at 60 degrees centigrade to evaporate HCl. Because we don't need HCl, we need the hydrolyzed amino acids. After the HCl is evaporated, we add 0.2 normal HCl and dissolve it thoroughly. And this solution is ready after the filtration for the HPLC or TLC analysis. This way we hydrolyze the proteins and we get the amino acids. So what's the conclusion? Because HPLC analysis shows that this is an efficient method for the hydrolysis of proteins because there is no values, so we are not giving any value here. And the significance is that hydrolysis in the food is the first step for the determination of nutrient value of the food. Percentage of specific or essential amino acids is very important in a food. In this way, hydrolysis is important. So the next experiment is the qualitative test for the amino acids obtained by the hydrolysis of the protein. A purple color compound is formed when ninhydrin. When ninhydrin reacts with free alpha amino acid. It reacts with free alpha amino acid. Proline and hydroxyproline give yellow color when they react with the ninhydrin. These two amino acids are exception. So this is the chemical equation. This is the ninhydrin formula. This is the amino acid. This is another ninhydrin. So they are making this kind of two ninhydrin with react with one amino acid and one molecule, three molecules of water are released. So what's the strategy of performing this experiment? We take a filter paper of 12 centimeter white and 22 centimeter, 12 centimeter long and 22 centimeter wide. कोई आई नहीं बच्चे कोई नहीं आया उसने कब बनाया आज नहीं नहीं अभी ले ली हुई है मैंने आप लेने थोड़ी ले अभी उनको बुलाए बच्चों को जी एंड ऑफ मई तक की लेकिन आगे एक्सटेंड करनी है आपने ले बिल्कुल ले बिल्कुल ओके सो आई एम सॉरी so this the purple pigment appears when ninhydrin react with the amino acid. So 12 centimeter long and 22 centimeter wide filter paper you are taking and you are making one line that is 2 centimeter away from the bottom and you mark the cross sign 2 centimeter from each other on this line. After marking this cross mark, you put a drop of separate amino acid on each cross mark. And after you put the solution of amino acid on each cross mark, you fold this filter, you dry it and you fold. You dry it and you fold this filter paper and staple this filter paper in the form of a barrel with the help of stapler. You put two staples. After you did this, you put this one, this side bottom down and this side bottom up. You put this barrel inside the beaker that is containing the solvent. So solvent will rise upward through the capillary reaction and will take the amino acid with it. So each amino acid react differently with the filter paper and they will travel differently. They will travel differently. Because of the difference in their mobility, we can identify each amino acid. So what's the strategy? Cut a filter paper 12 into 22 centimeter and use lead pencil to mark a line parallel to the bottom and then mark 10 crosses on this line. Add 2 microliter of each amino acid and each amino acid is 50 millimolar concentration and their mixture on the X mark. X means unknown amino acid is put on the last X bar. Dry the spots and roll the filter paper into the cylinder form and then place the filter paper into the beaker having the solvent and then wait for 1.5 hours for the complete separation process until the solvent reaches near the last and then we dry it and we spray ninhydrin, we dry it again actually even wet filter paper can be sprayed with the ninhydrin solution, then we dry it and then encircle each spot with a lead pencil and the distance of each spot traveled from this baseline is measured. This is the baseline. This is the baseline. Each distance is, for example, one spot is here. We will measure the distance from this point
to the middle of the spot, to the middle. How much, how to measure the distance? This is, for example, spot of one amino acid, middle of this spot to the baseline. This distance is measured. For example, and the calculate the RF value for each amino acid. RF value is the distance of a specific amino acid, means spot, from the baseline to the distance of the solvent from the baseline. And the RF value, for example, of alanine is 0.38, and for the asparagine is 0.5. These are the calculations. And the conclusion is that RF value for each amino acid is going to be this one respectively. And these are the regions required for this experiment. You can read these regions. नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इज, अच्छा ये तो अब आपके, अब मैं ना जो है सिर्फ आपको मतलब का ही पढ़ा देता हूँ, वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट इज द एस्टिमेशन ऑफ टोटल सीरम प्रोटीन बाय द लॉरी एसे। 6 मिनट रह गए हैं, 6 मिनट के बाद दोबारा कनेक्ट करनी पड़ेगी ना। The first reaction is the formation of copper ion complex with the amide bond. Amide bond के साथ क्या होता है, कॉपर आयन जो है ना कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है, and that is of the violet color. For example, this is the colorless protein, or some this is colorless protein, and previously we quantified we tested the amino acid. Now we are testing the proteins. You know, this is the, for example, one amino acid, and n time this is repeated, this is the protein. When this react with copper, that is of blue color, this color, this copper make a complex with the protein, amide bond of the protein, and the violet color appears, and the absorbance of this violet color correspond to the concentration of the protein. For example, we can take unknown protein from the ovular albumin, that is the white part of the egg, uncooked egg, and we take BSA, bovine serum albumin, as a standard, NaOH, sodium carbonate, sodium potassium tartarate, copper sulfate, following reagent is required. So we take the 0.1 ml of BSA of unknown sample and add 0.1 ml of 2 normal NaOH. And then we boil the sample at 100 degrees centigrade for 10 minutes and cool it down. Add 1 ml of complex forming reagent and incubate at room temperature for 10 minutes. Add 1 ml of FC reagent, falling reagent, and mix. And then take the absorbance at 660 nanometer. Absorbance at 660 nanometer. So what is happening? This is the BSA standard. 50 microgram per ml of BSA solution is giving us the absorbance 0.2, and 100 microgram per ml is giving us 0.24, 150, 0.36, 200, 0.49. And if we take the ratio of concentration to the absorbance, this comes out to be almost same. The ratio between the concentration and absorbance is almost same. And we take the average of concentration to the absorbance of all the standard samples. And absorbance of unknown sample is 0.612, but we don't know its concentration. When we multiply this absorbance with the average of the ratio of concentration of to the absorbance of the standard, we get the concentration of the unknown sample. This is the standard curve that is showing the relation between the BSA concentration and the absorbance. The absorbance is taken at 616 nanometer. Conclusion: the sample has 3.7 microgram per ml of protein concentration, and these are the reagents required to perform this experiment. Okay, next is the Bradford assay for the protein quantification. This method actually measures the presence of basic amino acid residues like arginine, lysine, and histidine. So what materials do we need? We need the BSA, MSC blue, and the phosphoric acid, the ethanol, and the spectrophotometer. What we do, we add the 100 microliter of the protein sample from the lysed cells. When the grown cells are lysed, we get the protein. Our skin is made of protein, our muscles are made of protein, some other things are there, but protein is also in major quantity. Take 20, 40, 60, 80, and 100 microliter separately, and add water to make the final volume 100 microliter. Then add 1 ml of the reagent and mix. Reagent we will see in the next slide. Then prepare blank by adding water instead of BSA solution. Then incubate the whole reaction at 37 degrees centigrade for 10 minutes.
and then we take the absorbance at 595 nanometer. We will see what did we do. We took the BSS solution to 0, 20, 40, 60, 80, and 100, and we added in these quantities of BSA the 100 microliter of water, 80, 60, 40, and 20, and 0. When we added water in this solution, the final concentration of the final volume is 100 microliter, and the final concentration of BSA came out to be 0 microgram per ml, 200 microgram per ml, 400, 600, 800, and 1000. You know the formula M1 V1 is equal to M2 V2, and M1 concentration, initial concentration is 1000, and the volume of initial volume, for example, is 20, and M2 concentration is unknown, this one unknown, and final volume is 100. When we solve for the M unknown, M question mark, so this comes out to be 100 multiplied by 20 divided by 100. This 2 is cut by this one, and the answer came out to be 200, and this is the 200. In the same way, all the concentration are calculated, and this is the absorbance values that are correspond to 200 microgram per ml is 0.03 absorbance, and for the 400 microgram per ml of BSA solution, it is 0.27, for the 600 0.2. So 600 0.52, for 800 0.79, and for 1000 it is 1.1 absorbance, and for the unknown solution the absorbance is 0.77, and for the unknown solution the absorbance is 77. So there are actually two methods for the quantitation, for the calculation. There are two methods of calculation to quantitate the proteins. We checked one method somewhere here. We checked one method in the previous experiment. This was our previous experiment. This was Lowry assay. In the Lowry assay, we utilize the ratio of concentration to the absorbance. We utilize the ratio of concentration to the absorbance to find the concentration of unknown. Okay, we utilize the value of ratio between the concentration to the absorbance to find the concentration of unknown. In FSC, you already studied like concentration. This is concentration. Oh, sorry. This is concentration, and this is absorbance, ABS. Okay, ABS. When we multiply these values, this is the concentration by absorbance, right? When we multiply this one by unknown absorbance, absorbance of unknown, so it comes out to be the concentration of the unknown sample, right? This was one strategy that we utilized here. But in the Bradford assay, I'm teaching you another strategy. We can use either strategy for any experiments. We can use either strategy for any experiment, but this strategy is superior. But this strategy of calculating the concentration of unknown sample is superior. Let's see what this strategy is. We utilize different concentrations of BSA here. In the same way we utilized in the previous experiment. We took the absorbance of these standard BSA solutions. Standard mean the whose concentration is known. Standard solution mean whose concentration is known. BSA concentration is known. This is called the standard solution. We calculated their absorbance. On the x-axis, we took the concentration of BSA. And with this increasing BSA concentration, there was increasing absorbance. Increasing absorbance was taken on the y-axis. We obtained different data points, and we joined these data points to get the standard curve, standard line. So this standard line, when is drawn, it gives the value of the R square and the value of and the equation of the straight line. This, when we draw this graph, this gives the value of R square and the equation of the straight line. This equation is y is equal to 0.013 x minus 0.256. Here x is this x-axis, the concentration of the
BSA, and Y is the absorbance that has been drawn on the y-axis. I will teach you how to draw this kind of graph and how to get the R square and the equation of the line. I will teach you. After we obtain this equation has been written somewhere here. You can see this equation is written somewhere here. And for the unknown sample, we have only the absorbance. We don't know its concentration, and we need to know its concentration. So the Y value for the unknown sample is 0.77. When we put this Y value 0.77 in this equation, the X value come out to be 1026 microgram per ml. So this standard curve and its equation help us to calculate the value, the concentration of unknown sample. So this is the concentration of unknown sample. So the protein concentration in the unknown sample is 1026 microgram per ml. This is the conclusion. This is the result. And these are the regions required. And the significance that it is the most elegant. It is an elegantly simple method as compared to other protein quantitation method. Only we have to add the dye, the region, this one region, and the reaction is ready to take the absorbance and for the results. So this is a very simple method. The next method for you is the protein quantitation by Geldahl method. So in this method, proteins and other organic food components are first digested. Foods are digested. Digested means they are converted into their basic units, and they are digested with the help of sulfuric acid in the presence of some catalyst, right? And the total organic nitrogen is converted into ammonium sulfate, and the digest is then neutralized with alkali solution, and we will all see these things in these reactions. Let's start the experiment. We are going to find the protein quantity in the milled rice. Milled rice means that rice whose brown cover has been removed, and that we are cooking in our home. It's the milled rice, white rice. Milled rice means white rice. We take the milled rice, we grind it, and we pass it through a 20 size mesh screen. We pass it through a sieve so that the bigger particles are not utilized for the experiment. We take the 5 gram of the ground sample in a Geldahl flask, and then we add the acid and the catalyst, and then we digest until the clear solution is obtained and all the organic matter has been broken down into its component. For example, protein was there. Protein is converted into ammonium sulfate plus water plus carbon dioxide. This is the reaction for the third step. Then we digest. The digest is then diluted with water and alkali containing sodium thiosulfate. Alkali means sodium hydroxide containing sodium thiosulfate is added, right? So sodium thiosulfate is added to neutralize the sulfuric acid. So what the reaction is happening? The ammonia formed is then distilled into a in the boric acid solution containing the indicator methylene blue and the methylene red. For example, this is the ammonium sulfate. It reacts with sodium hydroxide to produce the ammonia, and the sodium sulfate plus the water. This ammonia, when it is produced, then it reacts with boric acid to produce ammonium. This actually there must be plus ammonium plus. There must be a plus sign. Plus the borate ion. This is the borate ion. Then borate anion. Anion means negative charge is there. Borate ion or borate anion is proportional to the amount of nitrogen. This borate ion is as much as nitrogen is present. Then this borate ion is titrated with HCl, and the end point is orange. When the orange end point is obtained, then we stop adding the HCl. We can see the protein is producing the ammonium sulfate. Ammonium sulfate is producing ammonia, right? And ammonia is producing the final product, the borate ion, and borate ion is then quantified. Borate ion is then quantified. We will see the calculations. The corrected acid volume is that the ml of
HCl that has been used for the sample and for the blank. For example, for the sample we utilize 80 ml and for the blank is utilized 20 ml, and actually the amount of HCl used correspond to the nitrogen present is 60 ml, and moles of HCl is equal to the moles of ammonia present, and moles, and that is also equal to the moles of nitrogen in the sample. And the percentage nitrogen has the formula that normal molarity of the HCl utilized, corrected volume of the acid used, and grams of the sample used multiplied by 14 gram of nitrogen and divided by nitrogen per mole multiplied by 1000. This is the percentage nitrogen present. And we utilize 0.1 molar HCl for the titration of the borate, and we utilized, actually there should be 60 ml we utilized corrected volume of HCl, 0.1 molar of 60 ml HCl utilized, and 5 gram of filterized were used, and the nitrogen has a molecular weight of 14 and multiplied by 1000, and the percentage of 14 nitrogen present is 1.68. Percentage of nitrogen present in the rice is 1.68, but we have to calculate the percentage of 14, and for different foods it's different, and for the for this method we multiply percentage nitrogen by 5.17 to get the percentage protein present, and it comes out to be 8.68% of the protein is present in the milled rice. So this is the conclusion, and these are the standard value. Wheat has 13% protein, fish has that much protein, red bean has that much, and anjeer has 8% of the protein present. So BCA method is not in your syllabus. We are not going to study this one, and that's all. Take yellow part of an egg, of a boiled egg, ठीक है, boiled egg का yellow part लेना है आपने, and grind it in a 50 ml of chloroform. ठीक है, आपको पता है कि ये जो हाइड्रोफोबिक कंपाउंड है क्लोरोफॉर्म में, ये ना डिसॉल्व हो जाता है कोलेस्ट्रॉल. ठीक है, और आपने ये भी सुना होगा जो येलो पार्ट है ना उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल. ठीक है, और व्हाइट पार्ट में क्या होता है, एल्ब्यूमिन होता है. एक्टिव व्हाइट पार्ट में क्या होता है, एल्ब्यूमिन. Filter the suspension through the through using filter paper. Take 1 ml of cholesterol solution. This is considered to cholesterol solution. Add 1 ml of concentrated sulfuric acid and mix. Keep the test tube in the standard and let the two layers separate. The upper layer chloroform will be turned red. ये रेड में टर्न हो जाएगी. ठीक है, अच्छा. द सल्फ्यूरिक एसिड लोअर लेयर विल टर्न इनटू येलो. ये आपका ना जो रियल मैंने एक्सपेरिमेंट करवाया था ये उस वक्त हुआ था, ये रेड सा हो गया था, सारा पार्ट है ये रेड हो गया था सारा ही. ठीक है, डार्क रेड कलर. अच्छा ठीक है, ये हमने देखो जी सॉल्युबिलिटी टेस्ट किया लिपिड्स का, ये लिखा हुआ यहाँ पे कैसे करना है. ठीक है, हमने ग्रीस स्पॉट किया, ये वाला कर लिया हमने. ठीक है, ये आप देख चुके हो ऑलरेडी. मैं स्क्रीन को जरा बड़ा करके दिखा दूं मैं सारे. ये फिर आपने क्या किया जी, फ्री फैटी एसिड बलून किया आपने. फिर क्या आपने लिपिड्स की जो है ना एमल्सिफिकेशन की. ठीक है, आपने बाइल साल्ट कहां से लिए, आपने गाल ब्लैडर मंगवाया जो हैन का है, शॉप से मंगवा सकते हैं आप. उसको फैट में जब मिक्स करेंगे तो जो बाइल जो साल्ट होंगे वो डिसॉल्व कर देंगे फैट को. ठीक है, फिर आपने जी कॉर्नल की फोनिफिकेशन वैल्यू मालूम की. फिर आपने क्या किया, अनसैचुरेशन मालूम की ब्रोमीन की मदद से. ठीक है, फिर आपने क्या मालूम किया जी, ये क्या जी लिपिड एक्सट्रैक्शन की आपने ब्रेन से, उसकी परसेंटेज 0.1 निकली है. फिर आपने टीएलसी पता नहीं आपके है कि नहीं एक्सपेरिमेंट में, शायद है तो ये वाली की फिर आपने. ठीक है, और आपने कैलकुलेशन और सारे 10 के 10 कंपोनेंट पूरे करने हैं अंटिल देयर आर सम स्पेशल केस. ठीक है, अगर आपको ये कंपोनेंट भी मिस करेंगे तो फिर उसका ना आपको जो है माइनस होंगे स्कोर आपके असाइनमेंट में. फिर आपने ग्लिसरॉल की आइडेंटिफिकेशन आपका नहीं है, ये आयोडीन नंबर मालूम किया फिर आपने. ठीक है, ये आयोडीन नंबर जो मैं कह रहा हूँ खुद से पढ़ लो, तो आसान सा है. अच्छा, फिर आपने ये जो है ना टेस्ट ये है क्वांटिटेशन का. ठीक है, ये क्वांटिटेशन का है और ये जस्ट आइडेंटिफिकेशन का. ठीक है, एक मैंने आइडेंटिफिकेशन के लिए दिया है. आइडेंटिफिकेशन मीन जस्ट क्वालिटेटिव टेस्ट, ये जो है क्वालिटेटिव टेस्ट है. ठीक है, जो अब हमने अभी पढ़ा है ये वाला. ठीक है, अब मैं आपको क्वांटिटेटिव भी पढ़ा देता हूँ. अब क्वांटिटेटिव में क्या करना है जी, ये क्या है, लाइबरमैन बट चार्ट टेस्ट फॉर द क्वांटिटेशन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल. क्या करना है आपने, ऐड 6 ml ऑफ एलबी रीजन इन द टेस्ट ट्यूब. 6 ml आपने एलबी रीजन लेना है, एलबी का मतलब ये वाला रीजन. ठीक है, ऐड 0.1 ml ऑफ सीरम
एंड स्टैंडर्ड सैंपल ऑफ द कोलेस्ट्रॉल। आपको पता है कि हमारे सीरम में कोलेस्ट्रॉल होता है, वो लेना है 0.1 ml, 0.1 ml और 0.1 ml ये अपने स्टैंडर्ड कोलेस्ट्रॉल लेना है। फिर आपने इंक्यूबेट करना है 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे 20 मिनट के लिए, ठीक है। फिर आपने सिंपली एब्जॉर्बेंस ले ली 625 नैनोमीटर की। अब हम दोबारा कैलकुलेशन देखने जा रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल जो है आपके पास 200 मिलीग्राम पर 100 ml का है, उसका आपने 0.10 ml, 0.1 ml, 0.2, 0.4 एंड 0.5 ml लिया। उसमें आपने ग्लेशियल एसिटिक एसिड इतना इतना डाला, ग्लेशियल एसिटिक एसिड कितना डाला, 0.5 डाला, 0.4 डाला, और सब में टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, सब में 0.5 ऑफ टोटल वॉल्यूम में लिखें, 0.2 और 0.3 0.5, 0.1 और 0.4 0.5, सब में कितना वॉल्यूम हो गया, 0.5 हो गया। लेकिन सब में कोलेस्ट्रॉल की कंसंट्रेशन चेंज हो गई, क्योंकि हमने कोलेस्ट्रॉल के डिफरेंट क्वांटिटीज ली है, टोटल वॉल्यूम सेम है। हमने M1V1 फार्मूला लगा के फाइनल जो कंसंट्रेशन है कोलेस्ट्रॉल स्टैंडर्ड की, जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन मालूम हो उसको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहते हैं, मैट्रिक में हमने पढ़ा है, वो किया। और फिर हमने अननोन सैंपल भी कितना ले लिया जी, अननोन सैंपल जो है ना वो भी हमने 0.1 ml ले लिया, ठीक है। उसमें ग्लेशियल एसिटिक एसिड जो है ना टोटल वॉल्यूम जो है ना 0.5 कर दिया हमने उसमें भी, ठीक है, टोटल वॉल्यूम में 0.5 कर दिया। और हमने सबसे पहले स्टैंडर्ड सब सैंपल में जो एल्बी रीजन डाल दिया, कितना डाला, 6 ml, 6 ml ही लिखा जी, देख लें दोबारा, 6 ml लिखा हुआ, 6 ml डाल दिया हमने। 6 ml डालने के बाद फिर हमने एब्जॉर्बेंस ले ली 625 नैनोमीटर पे। हमने ये जो कोलेस्ट्रॉल की कंसंट्रेशन थी, कंसंट्रेशन को हमने एक्स एक्सिस पे ड्रा कर लिया, और हमने इनकी एब्जॉर्बेंस को हमने क्या किया, इनकी एब्जॉर्बेंस को हमने वाई एक्सिस पे ड्रा कर लिया। तो हमारे पास ये एक स्टैंडर्ड लाइन आ गई, स्टैंडर्ड लाइन आ गई, इसकी आर्स की वैल्यू भी आ गई, और इसकी ना हमारे पास इस लाइन की इक्वेशन भी आ गई। इसकी इक्वेशन ये है y इज इक्वल टू 0.0023 x प्लस 0.0003, ये हमारे पास स्टैंडर्ड आ गई लाइन की इक्वेशन। और हमारे पास जो अननोन सैंपल है उसकी एब्जॉर्बेंस सिर्फ हमें मालूम है, कंसंट्रेशन मालूम नहीं है। अब हम इस इक्वेशन को यूज करते हुए, ये जो इक्वेशन है ना यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, ये मैंने थोड़ा शॉर्टकट कर दिया। आप इस इक्वेशन को लिखोगे और इसमें y की वैल्यू की जगह 0.4 पुट करोगे, y की वैल्यू की जगह 0.3 या 0.4, ठीक है, y की वैल्यू यहाँ पे 0.4 पुट की, तो कोलेस्ट्रॉल की कंसंट्रेशन आ गई 173.78 मिलीग्राम पर 100 ml, पर 100 ml, ठीक है। ये अननोन कंसंट्रेशन आ गई सैंपल नंबर S1 में। S2 में क्या किया, S2 में जो एब्जॉर्बेंस कितनी पुट की, 0.42। जब 0.42 पुट किया आपने इस इक्वेशन के अंदर, y की वैल्यू पुट की, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 182। x की वैल्यू जो है वो क्या है, कंसंट्रेशन है, x एक्सिस पे क्या है, कंसंट्रेशन है, y एक्सिस पे क्या है, एब्जॉर्बेंस है। हमेशा याद रखना, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसको चेंज करने से दूसरे की वैल्यू चेंज हो, इसको चेंज किया कंसंट्रेशन को, फिर एब्जॉर्बेंस चेंज हुई, तो चूंकि इसको चेंज किया पहले, तो इसको हमेशा एक्स एक्सिस पे लेना है, इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस पे डिपेंड करता है, कौन करता है, कंसंट्रेशन में डिपेंड करता है, एब्जॉर्बेंस करती है, एब्जॉर्बेंस को हमेशा वाई एक्सिस पे लेना है, ठीक है। वाई एक्सिस पे क्या होता है, हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल को ड्रॉ किया जाता है, आपस में इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं इनको। रिजल्ट्स क्या है हमारे पास, सैंपल नंबर 1 और 2 की ये कंसंट्रेशन आ गई 173.78 मिलीग्राम पर 100 ml और 182.47 मिलीग्राम पर 100 ml। तो इस तरीके से आपने स्टैंडर्ड तरफ से ये ड्रॉ किया, ठीक है। अब मैं आपको ना ये ड्रॉ करना सिखाना चाहता हूँ, मैं आपको ड्रॉ करना सिखाना चाहता हूँ। मैंने ये जो वैल्यूज ले ली, मैं अब एक्सेल फाइल खोल लूंगा, कंट्रोल सी कर लिया मैंने, एक्सेल फाइल मेरे पास ये खुल गई फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, ये आपके पास आ गई चीजें, ठीक है। अब हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। हमने सिंपली क्या करना है, इतना सेलेक्ट करना है, इसको इसको हमने सेलेक्ट करना है, ठीक है। हमने कहा जाना है, हमने जाना है इंसर्ट में जाना है, ठीक है। हमने सेलेक्ट किया, तो इतना सेलेक्ट कर लो, इतना सिर्फ वैल्यूज को सेलेक्ट कर लो। हम इंसर्ट में गए, इंसर्ट में जाके ये रिकमेंडेड चार्ट लिखा हुआ, ठीक है। रिकमेंडेड चार्ट नजर आ रहा है आपको बच्चों? यस सर। यस सर। ये रिकमेंडेड चार्ट पे क्लिक किया आपने। उसके बाद जो है ना, यहाँ पे आप ऑल चार्ट्स में जा सकते हो, यहाँ पे अपने एक्स वाई स्कैटर में जाना है, एक्स वाई स्कैटर में जाना है, ऑल चार्ट में जाना है, एक्स वाई स्कैटर में जाना है आपने। फिर आपने ये वाला ग्राफ सेलेक्ट करना है, ये जिसका माइक चल रहा है वो बंद कर दे जब तक तुम कहूँ ना, शोर वाले बंदे माइक ना चलाएं, जिनके शोर नहीं वो चलाएं सिर्फ। फिर हमने ये वाला सेलेक्ट करना है ग्राफ, ये वाला, ठीक है। ये वाला ग्राफ है, यहाँ पे ब्लू डॉट्स भी हैं इस ग्राफ में और ऑरेंज डॉट्स भी हैं।
लेकिन इसमें सिर्फ ब्लू डॉट्स हैं। आपने ये वाला सिलेक्ट कर लेना है, सिलेक्ट करके ओके कर देना है, ये आपका ग्राफ ये बाहर आ जाएगा बन के, ठीक है। अब हम इसको इस फॉर्म में लेके आएंगे, ठीक है। अब एक बच्चा माइक चला के मुझे बताता है साथ साथ उसको आवाज आ रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने सबसे पहले क्या किया, हम आ रही है। शाबाश, ठीक है, आप सिर्फ आप बोलो। ये राइट क्लिक किया हमने डॉट पे, ठीक है। हमने क्या किया, मैं दोबारा आता हूं, मैंने क्लिक किया एक डॉट पे, ना सिर्फ ये ग्राफ सेलेक्ट होगा बल्कि आप देखिए पांचों के पांचों डॉट भी सिलेक्ट हो गए इनके, ये देखिए थोड़ा सिलेक्ट दायरा सा आ गया ना, ये सिलेक्ट हो गए। फिर मैंने राइट क्लिक किया, डॉट पे किया, ठीक है, राइट क्लिक किया मैंने, डॉट पे किया, और उसके बाद मैंने क्या किया, ऐड ट्रेंड लाइन, ठीक है। मैंने जब राइट क्लिक किया, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आई, उस पर कहां क्लिक करना है, ऐड ट्रेंड लाइन पे। जब मैंने ऐड ट्रेंड लाइन कहा ना, तो लाइन लग गई इस पे डॉटेड से, और साथ में राइट पे ये बॉक्स खुल गया। राइट पे बॉक्स खुला, देख रहे हैं आप? यस सर। देख रहे हैं, यहां पे देखिए ऑलरेडी लीनियर सिलेक्टेड है, लीनियर। अगर आप लॉगरिथमिक ग्राफ बनाना चाहे वो भी हो जाता है, ठीक है, लेकिन हमने वो नहीं करना, ठीक है। तो मैं दोबारा आता हूं, मैं राइट क्लिक किया, ऐड ट्रेंड लाइन किया, लीनियर किया, और यहां पे देखिए डिस्प्ले इक्वेशन ऑन द चार्ट की एक क्लिक किया मैंने, और डिस्प्ले आर स्क्वायर वैल्यू क्लिक किया। जो ही मैंने इसको क्लिक किया, आप देखिए यहाँ पे ये दोनों चीजें आ गई, देख रहे हो दोनों चीजें, इक्वेशन भी आ गई और आर स्क्वायर वैल्यू भी आ गई। ये इक्वेशन यूज करते हुए हमने अननोन सैंपल की कंसंट्रेशन मालूम करनी, ठीक है। अब इस ग्राफ को मैं ब्यूटीफाई करके दिखाता हूं, देखते जाओ। मैंने क्या किया, ग्राफ को मैंने बाहर से सिलेक्ट किया, यहां से मैंने कलर पकड़ के मैंने सबको ब्लैक कर दिया। पहले वो स्लेटी कलर था जो नजर विजिबल नहीं था। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने ग्राफ को दोबारा सिलेक्ट किया, फिर मैंने प्लस को साइन को क्लिक किया, फिर मैंने कहा कि एक्सिस टाइटल भी करने हैं, ठीक है, कर दिए। यहां पे मैंने क्या लिख दिया, CHOLESTEROL, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, क्या आ गया जी, मिलीग्राम पर 100 ml आ गया। और मैंने वाई एक्सिस पे क्या करना है जी, वाई एक्सिस पे एब्जॉर्बेंस आ गई, ठीक है, 625 नैनोमीटर, ठीक है, 625 नैनोमीटर लिख दिया। और आपको पता है कि जो एक्सिस का टाइटल होता है वो थोड़ा सा बोल्ड होता है, इसको बोल्ड कर दिया, इसको ब्लैक कर दिया, ब्लैक कर दिया, बोल्ड कर दिया, इसको भी मैंने बोल्ड कर दिया, 14 फॉन्ट कर दिया, ठीक है, ब्लैक कर दिया, ठीक है। ये जो लाइन है इसको मैं ब्लैक करना चाहता हूँ, ये ब्लैक हो जाएगी, यहाँ से ब्लैक कर दिया लाइन को मैंने, ठीक है। ये जो डॉट है, डॉट्स को भी मैं ब्लैक करना चाहता हूँ, डॉट को मैंने सेलेक्ट किया, डॉट को सेलेक्ट किया, नो सॉलिड 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 लाइन, सॉलिड लाइन, सॉलिड लाइन कर दी मैंने। अच्छा, डॉट नहीं सेलेक्ट हुआ, खैर डॉट भी हो जाते हैं सेलेक्ट। ये जो अंदर लाइनें हैं, आपको पता है ग्राफ के अंदर की लाइनें बात तक नहीं होती, कि मैंने लाइनें भी खत्म कर दी, ठीक है। और मैंने जो टिक मार्क भी कर दिए, टिक मार्क किसके होते हैं, टिक मार्क इसके नाम मेजर के आउटसाइड, आउटसाइड कर दिए, ठीक है। इसके लिए मैंने आउटसाइड F4 दबा के कर दिए, आउटसाइड। फिर ये जो एक्सिस है ना, ये काफी बारीक है, इसको मैंने मोटा कर दिया, इसका मैंने कलर ब्लैक कर दिया, ठीक है, ज्यादा मोटा हो गया, ठीक है, 1.75 कलर इसका मैंने ब्लैक कर दिया, ठीक है। इस तरीके से आपने जी ये सारा ग्राफ बना लिया है। अब आप देखिए ये सेम वैल्यूज है, क्योंकि सेम वैल्यूज थी तो ग्राफ भी सेम बना। आप देखिए इक्वेशन इनकी सेम है एग्जैक्टली, देख रहे हो आप इक्वेशन, y is equal to 0.0023x plus 0.0003। जो मैंने वैल्यूज यहाँ पे दी हुई है ना, वहां उसको यूज करते हुए आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने ये सारी सारी वैल्यूज सपोज्ड हैं, लेकिन ये मैंने ना रियल के करीब नहीं रखी है ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। इस तरीके से हम ये इक्वेशन ऑब्टेन करते हैं। आपको ग्राफ बनाना आ गया बच्चों? यस सर। जिसको नहीं बनाना है ना वो यूट्यूब पे लिखेगा, ठीक है, एक्सेल ग्राफ विद इक्वेशन। ये इक्वेशन हमें जरूर चाहिए होती है, ठीक है। मैं दोबारा बनाना सिखाते हैं, देखो यहाँ पे क्लिक किया, इंसर्ट पे क्लिक किया, रिकमेंडेड चार्ट पे क्लिक किया, और ऑल चार्ट पे चले गए, ऑल चार्ट पे चले गए एक दफा, यहाँ पे क्लिक किया, एक्सप्रेस कैटर पे किया, चार्ट टाइप पे किया, ओके कर दिया। जब ग्राफ बन के बाहर आ गया तो आपने डॉट पे राइट क्लिक किया, ऐड ट्रेंड लाइन किया, आपने डिस्प्ले इक्वेशन, डिस्प्ले आर स्क्वायर कहा, ये देखिए इक्वेशन और सब कुछ लिख के आ गया। मैं इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ, ठीक है, इसको मैंने बड़ा कर दिया, ठीक है। जितनी दफा मर्जी करो वही रिजल्ट आएंगे। तो इस तरीके से आपने ग्राफ बनाया करने, ठीक है, ओके। हाँ अच्छा, अब आप ओके सर। अब आप ना लग जाए अपनी असाइनमेंट्स पे। मैंने आपको ग्राफ बनाने भी सिखा दिए हैं, मैंने आपको एक्सपेरिमेंट भी सिखा दिए हैं। मैं एक मिनट जरा ना शेयर बंद करूँ इसका, शेयर शेयर स्टॉप शेयर।